Hello everyone. In this video, we will do few extra questions of the topic polynomials of class 10 mathematics. So let's understand the basic concepts जो हम पहले कर चुके हैं. General form of a quadratic equation क्या होती है? It is ax square plus bx plus c. If alpha and beta are its zeros, अगर इस equation के zeros alpha and beta हैं, then the relationship that we did between the zeros and the coefficients वो है alpha plus beta is equals to minus b by a and alpha beta is equals to c by a. Now हमको क्या करना है अब इन questions में जो following questions हैं उनमें rather than finding alpha and beta we have to use the relationship. वो कैसे questions होंगे? So the questions could be you will be given a quadratic equation और उसमें given होगा कि alpha and beta are the zeros. For example, let's take polynomial as x square minus 7x plus 8. Fine. ये quadratic equation है. इसके zeros are alpha and beta. Fine. इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है. पहला पार्ट है फाइंड में. The first part says you need to find the value of, suppose say 2 alpha plus 2 beta. We'll start with simple questions. And these questions, if I try to find the value of alpha and beta, I'll try to make this question unnecessarily complex. I should rather use the relationship. Now relationship अगर मैं try करूँ, कोशिश करूँ यहाँ पे apply करना, so the relationship says alpha plus beta is equals to minus b upon a. Now what is alpha plus beta? What is ABC here? So my a here is, if I compare this equation with this equation, तो यहाँ पे मेरा a होगा 1, b होगा -7 and c होगा 8. Here I have a as 1, b as -7 and c as 8. So what will be my alpha plus beta? Minus b की value आएगी -7 upon 1, that is 7. And alpha into beta will become c by a. c की value है 8, 8 upon 1 is 8 only. ये दो values मुझे याद रखनी है और अब मुझे ये values use करनी है in the upcoming questions. तो पहला question है मेरा 2 alpha plus 2 beta. मैं इसमें alpha beta को individually नहीं निकालूंगी. इन questions में कभी भी until unless आपको relationship verify करने के लिए नहीं बोलेंगे ना, तब तक हम alpha beta नहीं निकालेंगे. हम relationship को use करेंगे आगे की questions को solve करने के लिए. And I already have the value of alpha plus beta. Alpha plus beta is 7 and alpha into beta is equals to 8. तो यहाँ पे 2 into 7, the value is very simple, 14. इसका next part check करते हैं. How to do that? I want to find out the value of alpha plus beta whole square minus 3 alpha beta. Right? This part में again we are going to apply the value of alpha plus beta and alpha into beta. Alpha plus beta as per me is 7. 7 का square minus 3 times 8. 7 sevens are 49. 8 threes are 24 and the answer is 25 I believe. Next part करते हैं. Next part में let's pick up an identity. I want to know the value of alpha square plus beta square. सी हमारे को बहुत ज्यादा मन करेगा, जैसे हमने क्वेश्चन देखा आंख बंद करके हमको होता है सबसे पहले अल्फा बीटा निकाल देते हैं. अल्फा बीटा मिल गया तो विल रिप्लेस द वैल्यू. बट ये क्वेश्चंस कभी भी अल्फा बीटा निकाल के नहीं होंगे, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. इससे बेटर है वी विल डील इन द रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा. अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. एंड प्लीज माइंड इट, दिस इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. किड्स remember this is an identity, but we will be using this identity. So what is the identity of alpha plus beta ka whole square? The identity says this is equals to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उस टर्म को I will leave it there and rest everything comes together. ये इधर आ जाएगा.
alpha square plus beta square will become alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta. थर्ड पार्ट मेरा यही है, आई नीड टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो वहां पे वैल्यू डाल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. अल्फा प्लस बीटा इज 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा इज 8, 49 माइनस 16 माइनस कर लेंगे एंड द आंसर इज 33. तो जितनी भी नॉर्मल आइडेंटिटीज आपने अलजेब्रा में सीखी हैं वो सारी आइडेंटिटीज यू कैन अप्लाई इन अल्फा एंड बीटा ऑल्सो. All the algebraic rules. For example, 1 upon alpha and 1 upon beta निकालना है आपको. What is the value of 1 upon alpha and 1 upon beta? इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले we take the LCM. We will take the LCM again. And the LCM, because these are unlike terms, कोई common factor नहीं है. So the LCM will be alpha beta only. इस alpha को alpha beta बनाने के लिए मैं इसे beta से multiply divide करूंगी. और इधर बीटा को अल्फा बीटा बनाने के लिए मैं इसको अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी. तो my numerator will become beta plus alpha. And what is alpha plus beta? Numerator becomes alpha plus beta. Commutative law. Alpha plus beta is equals to beta plus alpha. क्या था हमारा alpha plus beta? 7. Upon alpha beta? 8. So the answer is 7 upon 8. The answer is 7 upon 8. इसका एक और लास्ट पार्ट कर लेते हैं. Wherein it is alpha by beta and beta by alpha. Again, I will take the LCM. Alpha beta. इसको अल्फा बीटा बनाने के लिए अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड और इसको अल्फा बीटा बनाने के लिए डिनोमिनेटर को बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड. तो मेरा न्यूमरेटर विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. डू आई हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर फ्रॉम द थर्ड आइडेंटिटी? थर्ड क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है, बट ये आइडेंटिटी याद कर लीजिए. यू कैन सिंपली अप्लाई द आइडेंटिटी. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. This identity you can simply use in the upcoming questions now. आप इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में यूज कर सकते हैं. Upon alpha beta. I already have the value of this. 7 square minus 2 into 8 upon 8. And the answer is 33 upon 8. तो जब भी alpha beta के questions आएंगे, that alpha and beta are the zeros of some polynomial, and then you have to find some expression ka value in terms of alpha and beta. So you're going to do these questions like this. That's it from my end. Thank you. I hope it helps.